It's about the social law, about society. Because you do business or you learn business, you teach business. So I think they thought that it's best to also know that business doesn't operate in isolation. They operate in society. But what is society? Now what kind of society there are we should have? And how to understand society? Because once we understand society, probably then we'll be able to do anything within society. And I personally believe that no matter what subject you study, you need to understand society first for that. For instance, in our field, we study international relations. But nations are also societies. And the decisions that are taken by the leaders, they're part of the society, those people. Leaders are part of the society. So societies make us, and we can also influence society. It can be both ways. Now this is debate within social sciences, within philosophy, within sociology, which influences which, or who influences whom. Now since we are social beings, we are social animals, we live in societies. A society may have some structure to it. A society may have some kind of networks to it. It may have a form. Or we need to see it. We need a society is populated by people, okay? People is, let's say, the agent there. But we interact in society. The primary thing that we do in society is we interact with each other. And if you look at this interaction, you can find different types of interactions. For instance, taking an example from your field, doing business. When we do business, we interact with people. For instance, a shopkeeper selling something is doing business. But he sells it to some people. People would come, they would ask the price, or they would just check the price, and if they like it, so they would pay, and then so they would interact with each other. And many customers would come to that shopkeeper, and then they would go to another shopkeeper, and that shopkeeper would then buy stuff from some marketplace or from somewhere, and that, let's say, if we call it a mandi, a marketplace, then mandi would be provided by that stuff by the farmer name. And there would be people who would be organizing that market, and they probably would tax, and the government probably would also be involved in, because they would also tax them. So the farmer would provide, let's say, the stuff, let's say it's wheat or any crop. But the farmer, when he comes to that market, he would, use transportation. So he would be interacting with the transporters. And he would buy stuff for his field where he would grow the crops. And you know that when you grow crops, a lot of input is required there, from fertilizer to seed to watering, to sowing in the land, using tractors and all kinds of machinery. Most of these people are involved. And then when they are harvesting, many people, let's say from the village, would be involved with them. This is how society works. There are interactions. The son of that farmer probably will be going to school. In the school, they will interact with the teachers and all that admin there. And those teachers would then, be part maybe of the government, and they would have their own families. They will have their own requirements. They will meet their own officers, let's say. Yes, so there would be the sons, the daughters probably would be sent to also
mosque to learn religion, to offer prayers. So they would have interact with other people, with the mosque leader. Some of these relations we think are important to us. Some we take for granted, but we acknowledge them and probably do not realize them, and we do that. आज भी हम जाएंगे तो अगर मार्केट जाएंगे तो हम 10 लोगों से मिलेंगे, जानते नहीं हो, और we know them by their profession or by the services they offer, and probably will see that okay they are reliable or not. This is how society works. Now, for society to work, there should be one element which is very important. And scholars call this trust, social trust. We trust each other in society. That if we pay something, we will get something in return. Or if we give services, we will give something in return for our services. It's reciprocation. Society was built on reciprocation. We reciprocate to each other. अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो शायद हम भी बुरा करें, अच्छा करता है हम भी करें। कोई फेवर करता है तो हमें भी फेवर करना पड़ता है। हम पेमेंट करें तो उसके बदले में हमें सर्विस मिल सकती है। That's reciprocation. But we need to have a trust for that. Now, trust is we cannot see. Now, saying that we need a trust in society means that I'm in a way theorizing about society now. How societies work or on what grounds it works. To make, let's say, claim करो कि it's untrust. आप कुछ और भी कह सकते हैं, तो बहुत कुछ कारण बहुत कुछ कहते हैं। ये assume करना, ये claim करना, इसके बारे में theory build करना है। क्योंक't मैंने पूरी सोसाइटी का सारा मैकेनिज्म बड़ा सिंप्लीफाई करके कर दिया, तो एक थ्योरी बना दी। ये तो ट्रस्ट पे चलती सोसाइटी। तो इस तरह की थ्योरी, इस तरह की थॉट्स फिलोसोफर्स ने क्लासिकल से लेकर तो अभी तक सब ने सोसाइटी के बारे में थ्योरीज भी बनाई है और सजेशंस भी दिए कि थ्योरी कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सी नहीं है और सोसाइटी को कैसे होना चाहिए। ये सब ने किया काम, बल्कि इंसान के ये उस बेसिक क्वेश्चंस में से है कि हाउ शुड वी लिव। देयर आर बिग क्वेश्चंस बिफोर अस, हम सब के सामने। फिलॉसफी इसी तरह का होता है। फिलॉसफी इज यूजुअली डीलिंग विद दोस क्वेश्चंस, एंड फिलॉसफी ऑफन दे डोंट कम विद आंसर, दे कम विद मोर क्वेश्चन यूजुअली। बट दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ वी improve, that we come up with more and more questions, because we sometimes answer some questions which will generate further questions. So the big question before us are, why are we here in this world? What is our purpose? Who created us? What will happen to us if we die? These are the basic questions that man has always asked or tried to find its answer, and there are answers for them from different fields. Religion से भी आपको मिल सकता है, साइंस से भी, और कहीं से भी नहीं भी मिल सकता, और कोई इसमें एग्रीमेंट भी नहीं होगी, but some people would believe in something. इसी में एक सोसाइटी जाती है। हाउ शुड यू लिव इन अ सोसाइटी? हमें सोसाइटी में रहना है या नहीं रहना? किस टाइप की सोसाइटी हमारे लिए सूट करती है? हमारी क्या हम ग्रोथ हमें चाहिए, तो क्या ग्रोथ हम विदाउट सोसाइटी कर सकते हैं, या सोसाइटी में रह के हम ग्रोथ कर सकते हैं? अगर हमें ग्रोथ करनी है तो क्या सोसाइटी हमें रोक रही है, या सोसाइटी ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर रही है? ये वो सवाल है जो कि सारे स्कॉलर्स इसी पे काम करते हैं। तो जैसे मैंने ये कहा कि ये ट्रस्ट पे चलती है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। आप लोगों को तो कम शायद एक्सपीरियंस होगा, आप लोग भी शायद ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, लेकिन जब हम जाते हैं नाई के पास, आजकल तुमको नाई लोग नहीं कहते हैं, बुरा बनाते हैं। ट्रेडिशनली हम यही कहते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ये भी प्रोफेशन है। तो अगर हम जैसे शेव कराते हैं
کے پاس وہ جو ریزر ہوتا ہے وہ ہماری یہاں سے بھی کاٹ ہوتے ہیں. اب وہ بولتے ہیں یہاں شیئر آ گئی ہماری, وہ صرف تھوڑی سی ریو کر دینا, وی کین ڈائی آن دا اسپاٹ. لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا کریں. ہم ٹرسٹ کرتے اس کے اوپر کہ وہ اپنا کام کرے گا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری کے لیے ہم جاتے ہیں, اس نے اپنا دل جو ہے نا اوپن کیا ہوتا ہے, وہ ایک معمولی سی بھی غلطی وہاں کرے یا جان کے بھی کہہ چلو اس کی ایک نس کاٹ دیتے ہیں, اور ہم نے آلریڈی لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا, سائن لے چلو. لیکن ہم نہیں, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ بچائے گا. تو باوجود اس کے کہ ہمارے معاشروں میں 10 مسائل بھی ہوں گے, but we still trust each other. This is how societies work. This is how you build networks in society. You're networked. آپ نے آپ پیمنٹ کی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے گی اور آپ کو ٹیچر پڑھائیں گے. ایک نیٹ ورک میں آپ یونیورسٹی کے نیٹ ورک میں, اگر آپ کو کوئی ہے افیلیشن ہوتی ہے آپ اس کے نیٹ ورک میں ہوتے ہیں, دوستوں کے نیٹ ورک میں ہوتے ہیں, مارکیٹ کے نیٹ ورک میں ہوتے ہیں, پروفیشنلی ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ ایک نیٹ ورک میں ہوتے ہیں. تو آئیڈیل سوسائٹی میں کون سی سوسائٹیز تو سب ہیں. ٹرائبل سوسائٹی بھی ہے, ماڈرن سوسائٹی بھی ہے, ہمارے جیسے ملکوں کی سوسائٹی بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی کئی سوسائٹیز ہیں, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہوتی ہے. سوسائٹی اس کو بھی کہتے ہیں, سوسائٹی کا ورڈ تو بڑا دور ہوتا ہے, وہ بھی ایک سوسائٹی بن جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کے یا ایک لوگ رہتے ہوں گے نا, وہ سوسائٹی بن جاتی ہے. اور آپ پاکستان کے دور افتادہ شہروں یا جگہوں پہ جائیں گے, وہاں کی سوسائٹی شاید کچھ ڈفرینٹ ہو. آپ کو کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کے درمیان, جس پہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ پاکستانی سوسائٹی ہے یا یہ انگلش سوسائٹی ہے یا یہ عرب سوسائٹی ہے. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کلچر, بالکل ٹھیک ہے. کلچر ہمارا الگ ہو سکتا ہے, اور لینگویج سر, لینگویج بھی ہماری الگ ہو سکتی ہے بالکل, اور اگر سیم بھی ہو تو فرق ہو سکتا ہے. اس میں اب پاکستانی بھی انگریزی بولتے ہیں جسے ہم کرتے ہیں, لیکن ہماری ریڈیو میں فرق نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہماری اپنی انگلش ہے, ان کی اپنی انگلش ہے. تو آپ پنجاب سے ہیں یا؟ جی سر. بہت آپ کے لیے کہاں سے؟ ہم لوگ اوریجنلی ویسے فیصل آباد سے ہیں, لیکن ہم بچپن سے دہلی پنڈی اور ادھر سر ڈیرا غازی خان. ڈیرا غازی خان, لیکن ڈیرا غازی خان از کالڈ پنجاب, پنجاب میں ہے نا. بالکل سر. تو آپ فیصل آباد میں اور پھر پنڈی میں, پنڈی کی بولی میں اور دیدی خان کی ڈیرا غازی خان کی بولی میں فرق ہے. جی سر. حالانکہ دونوں پنجاب ہیں اور پنجابی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کی اپنی بولیاں ہوں گی یا ڈائلیکٹس ہوں گی, تو اس میں بھی فرق تو ہوگا. اگر سیم لینگویج بھی ہوئی تو. اب آپ سوات سے ہیں, سوات میں کہاں سے ہیں؟ منگورا سے ہیں, اور وزیرستان کی پشتوں میں فرق نہیں ہوگا ہے, بلکہ بعض بات آپ انڈرسٹینڈ ہے. تو لینگویج, کلچر اور کیا ہو سکتا ہے جو ڈسٹنکٹ کر کے سوسائٹی کو دوسرے. پھر جب سوسائٹی ایک ہم اس کو فارمل بنتی ہے تو اس میں جیسے بہت سارے سسٹمز بن جاتے ہیں. جیسے کہ وہی والی بات ہے کہ ہم سوسائٹی کے کمپیریزن یا پاکستان کی سوسائٹی کو اگر ہم کرٹیسائز خود بھی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی سسٹمز بن چکے ہیں, جوڈیشری ہے, پولیس ہے, مطلب جب جن پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ان میں کرپشن کیوں ہے, یا ہمارے یہاں لوگ کیوں نہیں صحیح کام کرتے, جیسے ابھی میچ بھی ہوا تھا کرکٹ کا تو کیوں نہیں پرفارم کر رہے. تو
मतलब फिर सोसाइटी के अंदर और बहुत सारी चीजें चीजें हैं जिसको मतलब आप उसके ऊपर कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हाँ जी, और गवर्नमेंट इफेक्टिव कितनी है, गवर्नेंस कैसी है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, करप्शन है कि नहीं है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है, फ्रॉडी है कि सही है, पोलाइट है कि नहीं है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, वहाँ पर निज़ाम कैसा है डे टू डे, ठीक है, मार्केट कैसे, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, लोग डील कैसे करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज है, कितना नहीं है, ठीक है, लोगों का मुआश क्या है, जॉब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दूसरी सोसाइटी में क्या करते हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिसको आप देखें डिस्टिंक्शन बनाते हैं, दे आर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उनको आप मैच करते हैं किसी दूसरी सोसाइटी। फिर हम ये जो आपने बात की ना वो, फिर हम वहां पर भी आते हैं, हम फिर क्रिटिक भी करते हैं ना कि कौन सी सोसाइटी फिर बेहतर है। जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि यार यहाँ करप्शन क्यों है, या यहाँ पर सड़कें क्यों ठीक नहीं है, या ट्रैफिक का निजाम क्यों ऐसा है, या मतलब सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है ना, ये तो ज्यादा हम लोग कहते हैं सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, ओवरऑल हर चीज ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएं या किसी भी डेवलप कंट्री में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पे हमसे बेहतर है चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन वहाँ भी सब चीजें अच्छी नहीं होंगी, उनकी भी ऐसी चीजें होंगी कि वहाँ उधर रहेंगी तो आपको लगेगा कि ये इनकी अच्छी नहीं है, हमारी अच्छी है, उनसे बेहतर है हमारी। कुछ चीजों में आपको लगेगा ऐसा, और बहुत सारी चीजें आपको उनकी अच्छी भी लगेगी कि हाँ ये यहाँ पर आई, हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए, हम कंपेयर तो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सबके जहन में एक आइडियलिज्म है कि हम किस तरह की सोसाइटी चाहिए, कि हमें एक सोसाइटी में एक यूटोपिया जिसको कहें, यूटोपिया एक आइडियल फॉर्म, एक जन्नत हमें चाहिए कि हमें जिसपे हम प्रॉस्पर कर सके, सुकून से रह सके, प्रोग्रेस कर सके, खुश रह सके। तो इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो शायद आइडियल नहीं है, इसलिए इंसान सोचता है, फिलोसोफर सोचते हैं कि कौन सी सोसाइटी बेस्ट है। सवाल ये बनता है फिर कि आपकी नज़र में एक सोसाइटी बेस्ट हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर, और मेरी नज़र में कुछ हो, ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है। ये कन्विंस करना कौन सी सोसाइटी बेहतर है ये बड़ा एक काम है, तो फिलोसोफर में इसी पे काम की कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। तो कौन सी बेहतर होनी चाहिए, हर की अपनी भी हो सकती है, लेकिन आपने अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो स्टार्ट में इसमें लिखते हैं, तो लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका हम क्यों बना रहे हैं आजादी लेकर, तो हम पहले भी रहे ना, ऑक्युपाइड भी रह रहे थे, हम भी ये कह सकते हैं अंग्रेज भी था तो वो भी थे, तो क्या मतलब वो भी गवर्नमेंट थी, हमारी भी गवर्नमेंट है, हम क्यों आजादी चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। अमरीकियों ने इस पे सोचा, उनके फोर फादर्स ने, कि असल में आजादी लेकर ब्रिटिशर से हम करना क्या चाहते हैं, हमारी जिंदगी, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो, मकसद क्या हो, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, सेटिंग गोल्स फॉर दिस सोसाइटी कि अभी ठीक नहीं है चीजें, हमें आगे जाना है। उन्होंने कहा कि लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सोच समझ के उन्होंने इसको दिया। लाइफ का मतलब ये है कि our life should be safe, there should be no danger to our lives, मतलब we should feel safe and protected। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली मतलब मुझे काम को डर लगता है, मैंने वॉक छोड़ दी, क्योंकि हमारे मोहल्लों में और हर जगह देखते हैं मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं और आप कोई बंदूक रखते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, ये तो रोजाना इस्लामाबाद में कॉमन है, सैकड़ों की तरह में डेली हो रही थी। तो लाइफ की सेफ्टी तो नहीं है। लिबर्टी क्या है
ان کے مطابق لبرٹی بڑی ضروری ہے، فریڈم، انسان کی آزادی. اس کے پیچھے ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، ان کی سوسائٹی، ان کی ایک فلسافیکل ٹریڈیشن ہے جو ابھی میں ڈسکس کروں گا آج کے لیکچر میں. اس کے بیس پر ہم سمجھتے ہیں وہی ہے کہ اس سے انڈیویجول